chemical properties of ethers. First chemical property, first chemical property of ether is reaction with reaction with HX, hydrogen, hydrogen halides, hydrogen halides like Hi, HBr, HCl, HF. Okay. Reaction simple है. Reaction is consider any ether R O R dash. ठीक है. When it react with hydrogen halide HX, then one alcohol and other alkyl halide molecule is formed. Charges separate करो बच्चे. सबसे पहले negative positive, X is delta negative, hydrogen delta positive. Okay, this one is clear. If this bond is cleaved, ध्यान नाल देखो, this bond is cleaved, then delta negative, okay, and R is delta positive. Try to form the product. क्या हो जाएगा? It will give product R X positive negative and second molecule ROH. ठीक है, alkyl halide and ROH. This is first case. ठीक है, case 1. Okay, और second time other possibility क्या हो सकती है? Other possibility is if this bond is to be cleaved, this can be the second possibility. ठीक है, if this bond is to be cleaved, then decide delta negative, delta positive, then this part is delta negative, R becomes delta positive. Now decide the product. क्या बनेगा? Or this is first case, this one is second case. Product check करो. In this case, X R dash X, very good, plus H2O. अच्छा ऊपर वाला R dash था, sorry, plus ROH, ROH. देख लो मैच हो रहे हैं, डिफरेंट बने. इफ दिस इज ओके तो ठीक है. अदर देन दैट एक एग्जांपल देखो. कंसिडर दिस ईथर CH3, सिंपल एग्जांपल है CH2O CH3. कंसिडर दिस ईथर. ठीक है. If this ether is treated with HX, suppose with HI, क्या प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड है? फर्स्ट केस, if this bond is to be cleaved, check करो प्रोडक्ट. if this bond is to be cleaved, then CH3 CH2 I, ठीक है, प्लस CH3OH नहीं बनेगा ना? और second possibility is if this bond is to be cleaved. first वाला लिखता है, second देखो, if this bond is to be cleaved, now the product is CHOI. पहले देखो CH3I, O नहीं, bond is तो पहले देखो है CH3I plus CH3 CH2OH. There are two ways, means first case, second case. Which one is right? How we decide? ठीक है, ठीक है, कि मैं पता लगेगा. वही पॉइंट है. दिस इज द थिंग.
How to decide? How to decide? The reaction proceeds through. Okay. How to decide? The reaction proceeds through one or two. दोनों तो होणगे नहीं. Either first way or second way. ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ बॉन्ड ब्रेक होएगा. ठीक है. For next 10-15 minutes यही डिसाइड करना है which bond is to be cleaved. पर in any way जो भी बॉन्ड ब्रेक होए प्रोडक्ट क्या बनते हैं बच्चे. अल्काइल हैलाइड एंड अल्कोहल. one molecule of alkyl halide, another molecule of alcohol. Okay? रिपीट कर रहे हैं. one molecule of alkyl halide and another molecule of alcohol is formed. बॉन्ड कोई भी ब्रेक होए either one or two. अच्छा 2 सेकंड. Okay. How to decide? The reaction proceeds through one or two. चेक कर रहे हैं. First point. Or case 1. If both the alkyl groups around oxygen, जो ऑक्सीजन है सेंट्रल ऑक्सीजन, अराउंड ऑक्सीजन आर प्राइमरी. ठीक है. बोथ द अल्काइल ग्रुप्स आर प्राइमरी, देन द स्मॉलर alkyl group forms the alkyl halide. ठीक है जी. द स्मॉलर अल्काइल ग्रुप फॉर्म्स द अल्काइल हेलाइड. एग्जाम्पल कंसिडर करो. फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 O CH3 plus HI. both the alkyl groups are primary. दिख रहे हैं. this carbon अनूप दिख रहा है. this carbon is 1 degree. this alkyl group is also 1 degree. दोनों प्राइमरी है ना. both the alkyl groups around oxygen are primary. Then which alkyl group forms alkyl halide? ब्रमलीन कोई आंसर. सर मिथाइल. मिथाइल वन. ठीक है. छोटे वाला. ठीक है. सो अल्काइल हैलाइड कौन फॉर्म करेगा. इट विल फॉर्म्ड बाय स्मॉलर ग्रुप CH3I plus CH3 CH2OH. alcohol obvious, that is understood. Alcohol is formed by the another group. Okay. रीजन दे दूं. this group is smaller group. ठीक है. if it is smaller group it will form alkyl halide. It will form alkyl halide.
ठीक है, दिस इज फर्स्ट केस। नोट कर लो प्लीज। सेकंड केस लिख रहे हैं, फर्स्ट केस ने रीड प्रॉब्लम हो तो पूछते रहना। सेकंड इज if one of the alkyl group is primary, सर yes, सर एक सेकंड ऊपर कर रहे हो। if one of the alkyl group is primary and another is secondary, primary and another group is secondary, then the primary alkyl group will form the alkyl halide. Is it okay? Primary alkyl group will form the alkyl halide. Primary. Remember this. Okay? If one of the alkyl group is primary, another is secondary, then primary will form alkyl halide. अब रीजन दे रहा हूं, पर रीजन रह गया था. Reason is because reaction proceeds through SN mechanism. ठीक है? And remember SN mechanism. What is the reactivity order? Reactivity order is 1 degree, 2 degree, 3 degree. Remember this in SN, my mistake, SN2. Change karo please बच्चे. As a reaction takes place through SN2 mechanism. And SN2, 1 degree alkyl halides react fastest. That is why. Example देखो. Example is consider this one as secondary alkyl halide on left side, alkyl group on left side, and primary alkyl group on right hand side of the oxygen. Label कर दूं. This group is 2 degree, right hand side 1 degree. When this thing is treated with hydrogen iodide, hydrogen bromide, or hydrogen chloride, product will be, which group will form alkyl halide? The primary. Okay, which one? The primary. So write down the product. Product is CH3OH plus CH3CH2CH2I. ठीक है, smaller group will form alkyl halide. This is the second case. कोई केस है जो आ रहा है दिमाग में, कोई डिफरेंट हो इससे? प्राइमरी हो गया, प्राइमरी सेकेंडरी हो गया. अदर देन दैट
Next one is different and is important. If one of the alkyl group, if one of the alkyl group is tertiary, if one of the alkyl group is tertiary, then it will form, बिल्कुल ड्रास्टिक ऑपोजिट है, it will form the alkyl halide. It will form the alkyl halide. दोबारा repeat करूं, if one of the alkyl group is tertiary, then it will form the alkyl halide, the tertiary group. क्या होएगा? देखो, reason why this, because now the reaction proceeds through SN1 mechanism, and we know in SN1 tertiary alkyl halides are most reactive. ठीक है, mechanism change हो गया. Tertiary alkyl halides are most reactive. Example देख लो. CH3, 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 tertiary group, O, CH3, this one. This group is tertiary and another one is primary. When this thing reacts with HI, product is the tertiary group will form alkyl iodide, tert butyl iodide plus CH3OH. Is this okay? So these are three different cases. मैं थोड़ा zoom out कर रहा हूँ. नोट कर लो. अनूप तेरा फोन ठीक होया? हाँ जी सर चल रहे हैं। ओके ओके ओके.
ठीक है, नोटेड। यस सर। डन। ठीक है, लास्ट केस है in case of alkyl, in case an alkyl aryl ether reacts with HX or HI, alkyl group forms alkyl halide। ठीक है, या फिर इन अदर वर्ड्स क्या बोलूं, इन अदर वर्ड्स aryl part always forms an phenol, a phenol, always forms a phenol। एग्जाम्पल देखो, प्लस HI changes to OH plus CH3I। ठीक है, any consider any alkyl aryl ether, for example this one was methyl phenyl ether, कोई भी हो, फिनोल ही फॉर्म होएगा। दिस वाज मिथाइल फिनाइल ईथर। नेक्स्ट इज O CH2 CH3 plus HI। Oh, CH3 CH2 I। ठीक है, it will form phenol always। जनरलाइज कर दूं, बॉन्ड कौन सा ब्रेक होएगा, this one only। ओके, सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शंस हैं इसकी, इलेक्ट्रोफिलिक substitution reactions। Electrophilic substitution reactions of alkyl aryl ethers। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ए पार्ट कर लो,
पहले भी फर्स्ट चैप्टर में भी करा है, फिनोल्स में भी करा है, रिपीट ही है. In electrophilic substitution reaction, A part is nitration. Nitration. So direct reaction लिख रहा हूँ. When anisole, that's OCH3, is treated with nitric acid, concentrated HNO3 plus concentrated H2SO4, nitrating mixture, क्या प्रोडक्ट फॉर्म होएगा? OCH3 at para position in OCH3 nitro group at ऑर्थो पोजीशन. नाम देखो, पहले वाला पैरा नाइट्रो, पैरा नाइट्रो एनिसोल, because this compound is एनिसोल. सेकंड वाला क्या हो जाएगा? ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल. पैरा नाइट्रो एनिसोल, सेकंड वाला हो जाएगा ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल. P is halogenation. Halogenation देखो, if this anisole is treated with bromine, chlorine, anything like this, in ethanoic acid, in ethanoic acid, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? Bromine is introduced at para position, or it is introduced at ortho position. So product क्या बने? Products are para bromo anisole, ठीक है, and it is formed as major product. Orthobromo anisole, that is formed as minor product. This is nitration, halogenation, और कोई reaction. C part is Friedel-Crafts alkylation. Remember this name reaction? अभी 2 बार आ गई है. Friedel-Crafts
alkylation. Friedel-Crafts alkylation. In this Friedel-Crafts alkylation, this alkyl aryl ether is treated with CH3Cl in anhydrous AlCl3 ठीक है इसलिए इसको 1 लेना 2 3 4 it is 4 methoxy toluene साइड पे दस रहे हैं why it is toluene because this compound is toluene है ना methyl benzene is toluene so it is 4 methoxy toluene or you can say para methoxy toluene that is formed as a major product. D part is Friedel-Crafts acylation. Friedel-Crafts acylation. Same reaction which we have done 2 times before this. Benzene or substituted benzene treated with acyl chloride like CH3, COCl. Again, anhydrous AlCl3 product is OCH3 C double bond O CH3 plus OCH3 C double bond O CH3. Okay. First one is para methoxy acetophenone and this is formed as a major product. Acetophenone ही बनता है पहले भी जो reactions करी हैं para chloroacetophenone in first chapter, para hydroxyacetophenone in reactions of phenols, and this one para methoxy acetophenone. Okay. These are few electrophilic substitution reactions of ethers. ठीक है और अच्छा आपने वो जो मैंने आपको बोला था डाउनलोड करी होगी है ना ओपन करो उसे इसे नोट कर लो पहले फिर ऐप ओपन करना ऐप करनी सर ओपन हाँ जी इस नोट कर लो पहले फिर करो ऐप ओपन
हो गई? यस सर। ठीक है, जब ऐप ओपन कर रहे हैं तो बिल्कुल स्टार्टिंग चो लिखा हुआ ऐप मिलेगा, हाई योर नेम, है ना? सर मैं नीचे नीचे है माई कोर्सेज, दिख रहे हैं माई कोर्सेज। हाँ जी सर। फिर ऑल कोर्सेज ਤੇ होना है, एक तो टिक करना है ਤੁਸੀਂ अपने वाला जो भी सिलेक्ट करा है, JEE स्टैंडर्ड 12 हाँ जी सर। मिले, क्लिक करो इस पे। करता सर। हाँ जी, तो ओपन होएगा, एक साइड लिखा होएगा लाइव, नाल ही लिखा होया टेस्ट ब्लैक च, सर टेस्ट नहीं करना है। मिलिया? यस सर। सर टेस्ट नहीं करना है आपको सर। हाँ जी, टेस्ट नहीं करना है। मिल गया सर। मिल गया। नाउ टेस्ट पे क्लिक करो।